So let's start your mock for this structure program. First of all, introduce yourself. Sir, my name is Achanta Singh. I belong to a city, Sihor, in Madhya Pradesh. My schooling have been done from Sihor itself. Post that, I have done my B.Tech in civil engineering from NIT Rourkela. I did my summer internship in Vizag Steel Plant. And despite project, I have studied subjects of irrigation engineering and EIA in my final year. And apart from academics, I like reading, watching movies, and playing chess. Okay, what was your B.Tech project? Sir, actually, in my final year, COVID was at the peak, so institute gave us two options. Either you can select a project or you can select a subject. So I selected a subject. In seventh semester, I studied irrigation engineering, and in eighth semester, I studied environmental impact assessment. Okay. What is this rigid module? Rigid module. Sorry, sir. Okay. What is this aqueduct? Aqueduct. Sir, when a canal and a drain is passing, and when the canal is above the drain, that cross structure is called as aqueduct. Okay. Now listen carefully what I'm saying. RL of canal bed level. You can write on the paper also. Yes. RL of canal bed level at be 100. .000. Yes, sir. And this high flood level is 101.500. 101. 101.500 high flood level. Yes, sir. Okay. And this drain bed level is 99.500. Yes, sir. Okay. And this FSL is yes, 102. Yes. So what type of structure you will prefer there? So I think super aqueduct. Siphon aqueduct. Siphon aqueduct. Siphon aqueduct. Yes, sir. Okay. Okay, so Arun sir want to interact you first. Okay. So yes, Arun sir, over to you. Okay, thank you, sir. Achintya, am I audible to you? Yes, sir, you're audible. Okay, Achintya, let's start. So my first question is, suppose you have a simply supported beam and there is a point load acting on it. Yes, sir. Of some magnitude, okay? And there will be some bending moment that will be developed throughout the span. Now you have replaced this point load by a UDL, and the magnitude of UDL is same as that of the point load. Okay, so the total magnitude of UDL is same as the point load. Yeah. Okay, sir. Magnitude is same. Okay, sir. So you have to tell me how will the maximum BM will change? Will it remain same or decrease or increase, whatever? Yes, sir. Sir, it will decrease. Okay, what was the maximum bending moment earlier? So earlier it was PL by 4 and now it will become PL by 8. Okay. If I have a simply supported beam, suppose same simply supported beam is there, and you have applied moment on one side.
Okay, sir. any moment of a magnitude, let's say m, on one of the supports. What is will the slope on both the ends same, on both the supports same or different? It will be different, sir. By how much amount? सर आई थिंक दी मतलब नेक्स्ट वाले सपोर्ट पे हाफ होगा और जिस वाले सपोर्ट पे हम लगा रहे हैं वो उसका दुगना होगा रोटेशन जो होगा. ओके, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वैल्यू अगर निकालना हो तो? ठीक है, रेशो इज 2:1 दैट आई गेट, बट द वैल्यू, डू यू नो द वैल्यू? So the values are ml by 3 ei and ml by 6 ei. Okay, correct. Can you tell me the relationship between Young's modulus of elasticity and shear modulus of elasticity, modulus of rigidity? Yes, sir. E is equal to 2g times 1 plus mu, where E is the elastic modulus and G is the shear modulus and mu is the Poisson's ratio. Okay, and the relationship between Young's modulus and bulk modulus is? So E is equal to 3k times 1 minus 2 mu, where E is the Young's modulus, K is the bulk modulus, and mu is the Poisson's ratio. Torsion equation, can you tell me? Yes, sir. So tau by R is equal to T by J is equal to G theta by L. Okay, what does this theta stands for? So theta is the twist. Angle of twist. Okay. Yes, sir. What are force methods and displacement methods, Achintya? Sir, these are methods which are used to analyze the indeterminate structures. When the forces are the unknowns, we use force methods, and when the displacement is the unknown, we use displacement method. In other way, we can also say that when the DSI, degree of static indeterminacy, is less than Ki, then we use force methods, and when Ki is less than DSI, then we use displacement methods. Can you give me 3 examples of both the methods? Sir, force method, there are method of consistent deformation, method of least work, and the force stiffness matrix. These are the 3 methods. And in the displacement method, we can use moment distribution method, slope deflection method, and stiffness matrix method. Okay. Okay. Can you tell me about what is flexural rigidity of a number? Sir, mathematically, it is the multiplication of E and I, that is the Young's modulus and the moment of inertia. And sir, can you give me 1 minute? No issue. Yes, sir. Mathematically, it is the product of E and I, moment of inertia, and the Young's modulus. And physically, we can say that the member having more flexural rigidity will require more moment to be deflected or to be twisted. आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्या लास्ट में आपने क्या कहा? सर, जिस मेंबर का EI ज्यादा होगा उसको रोटेट करने में हमें ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा. फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है. और मैथमेटिकल फॉर्मूला इज E into I, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. रोटेट करने में आपको ज्यादा वो लगाना पड़ेगा, तो दैट विल बी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, यस सर. ओके, ठीक है. अगर मेरे पास एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है तो क्या उसका बीएमडी बना सकते हो अगर उसके ऊपर यूडीएल लग रहा है? कैसा दिखेगा उसका बीएमडी? एक रफ आइडिया बता दो. यस सर.
थोड़ा सा इस तरफ करो। ठीक, ये जो आपने नीचे नेगेटिव वाला पोर्शन शो करा है, ये आपका सपोर्ट वाली तरफ नहीं होगा? यस सर, फिक्स्ड एंड पे होगा सर, फिक्स्ड एंड पे होगा, वहां पे तो जीरो आएगा। वहाँ पे तो ठीक है, zero। चलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, लेट मी गिव यू फीडबैक। आई थिंक हम लोगों ने जो कल बात करी थी स्नैप में, तो आपने उस पर थोड़ा सा फोकस किया है। आई हैव टोल्ड यू कि आप एक बार रिवाइज करिए सारे अपने जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं और जो हैं वो आपने एक बार देखा है। तो Yes। मैंने आपसे स्लोप की वैल्यू पूछी थी, वो आपने बता दी है। तो ठीक है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो अच्छा है। बाकी जो मैं आपसे रिसर्च वाले की बात करी थी, उस पर एक बार थोड़ा सा और फोकस दोबारा से कर लीजिए। हाँ सर, वो देख लिया मैंने वो। ओके, गुड। ओके तो सर। अभी बाकी टीचर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे और वो भी आपको अपना फीडबैक देंगे। तो ठीक है, ओवर टू यू सर। Yes, Jatin sir. Hi Achinte, how are you? I am good sir, thank you. So Achinte, just tell me what's the basic difference between determinate and indeterminate structures? The basic difference is determinate structures can be analyzed only by using equilibrium equations, whereas if we want to analyze the indeterminate structure, we need to use some other methods. The equilibrium equations are not sufficient to analyze the indeterminate structure. And what are the other methods? सर फोर्स मेथड की अगर बात करें तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गया, फोर्स मैट्रिक्स मेथड हो गया, मोमेंट 3 मोमेंट इक्वेशन मेथड हो गया, ये सब फोर्स मेथड्स हैं और जो कि हम तब यूज कर रहे हैं डीएसआई कम है केआई से। तो और अगर केआई कम है डीएसआई से तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे, जैसे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टिफनेस मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, ये सब। Do you know something about compatibility equation like that? Is there any equation यस like that? Compatibility equation. What यस is सर। it? सर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट नहीं होती तो हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को ही यूज करते हैं, और अलग अलग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को जब यूज करते हैं तभी हमारे पास अलग अलग मेथड्स आती हैं, उन्हीं का नाम है जो मैंने अभी बताया। Mostly we construct a structure like indeterminate structures in our buildings, but and we know that it is difficult to analyze यस सर। comparatively. So why we are constructing indeterminate structure? What the basic reason behind it? Sir, there are many reasons. Like first of all, is indeterminate structure is more stable. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर बीच में कहीं पे क्रैक आ गया तो वो फेल कर जाएगा, लेकिन जैसे एक फिक्स्ड बीम है उसमें अगर कहीं पे बीच में क्रैक आएगा तो वो फेल नहीं करेगा। तो एक ज्यादा स्टेबल है। दूसरा है कि जो मैक्सिमम मूवमेंट आता है वो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में कम आता है, जैसे कि फिक्स्ड बीम और सिंपली सपोर्टेड में देखेंगे तो फिक्स्ड बीम में मैक्सिमम मूवमेंट कम आएगा। Okay, great. Assume just assume that you have a frame, single portal frame you have, and beam of span is 10 meter. ओके सर। Okay, or at a distance of 3 meter from left column, point load is acting there. Just tell me, will this frame will sway or not? And if yes, in which direction it will sway? सर व्हाट इज द टोटल स्पान? 10 meter. Total span of length is 10 meter, and point load is acting from 3 meter from the left column. यस So सर। will this frame will sway or not? सर this it will sway in the right direction sir. Right direction. Why? सर बिकॉज अगर बीच में से, मतलब मेरा मेथड थोड़ा अलग है, अगर बीच में से काट के देखते हैं तो जो राइट वाला पोर्शन है उस पर तो कोई लोड लग ही नहीं रहा है, लेकिन जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उस पर चूंकि इस तरफ लोड लग रहा है तो वो राइट में स्वे कर जाएगा। तो देखा है तो पूरा So there is स्ट्रक्चर। a so that means there's a more moment in the left column comparatively. यस। Okay. Uh, okay. Just tell me, do you know about ILD? What is ILD? यस सर, इट स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। Yeah. What is the significance of it? सर आईएलडी से हम जब एक कोई भी लोड एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट पे जाएगा तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या क्या चेंजेस आएंगे बेंडिंग मोमेंट में, शेयर फोर्स में, डिफ्लेक्शन में, वो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से पता कर सकते हैं और उस हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर का मटेरियल और उसकी डायमेंशन तय कर सकते हैं।
In ILD topic, we study one principle, that is MB principle, Miller-Dirichlet's principle. Yes, sir. Just tell me the validity of this method, where this method can be used. Sir, it can be used only for determinate structures only, and in indeterminate structure it can be used for, but only for linearly elastic only, and it cannot be used to calculate the ILD of deflection. Okay, great. So Chinta, I think you have a great knowledge about structural engineering. Thank you, sir. मेरी तरफ से तो सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. तो बस बाकी और मेंटर्स आपको अपना फीडबैक देंगे. बाकी मेरी तरफ से ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल ओके फ्रॉम माय साइड. Thank you. ओके सर. सो सर, विक्रम सर. Yes. Chinta, Yes, so what you did in irrigation? सर इरिगेशन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है सर, स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ा है. How will you define structure? Sir, structure is something which is used to transfer the load coming from the top to the earth. Okay, what is the difference between the frame structure and load bearing structure? Sorry, sir. What is the difference between frame structure and load bearing structure? Load bearing. Sorry, sir. I don't know. What you studied about the structure? Sir, the gate concepts, sir. Whatever the syllabus of gate. What do you think? Think about the civil point of view now. You're a civil engineer. Think about that one. Don't think a particular pattern, particular subject. Okay. So if the structure's indeterminacy is more, what do you think? Is it good for us or bad for us? Sir, can you give me 1 minute, sir? Sure. Yes, sir. Sir, indeterminate structure better होगा, sir. Why? सर क्योंकि एक तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो इनडिटर्मिनेट में कम आएगा. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कम आएगा तो मटेरियल रिक्वायरमेंट कम आएगा. दूसरा पॉइंट है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है. जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक फिक्स्ड बीम है. सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कहीं पे क्रैक आ जाएगा तो सिंपली सपोर्टेड फेल कर जाएगा, वहीं पे मूव कर जाएगा. लेकिन एक फिक्स्ड बीम में अगर कहीं पे क्रैक आएगा तो वो स्टेबल तब भी स्टेबल, इनडिटर्मिनेट ज्यादा स्टेबल होता है. इसलिए इनडिटर्मिनेट. What do you think? फिर तो हमें bridges fix बनाने चाहिए. Then why we are putting the bearings? Why we are making it as simply supported? Isn't it? सर ब्रिजेस तो सर केबल वो मतलब सस्पेंशन ब्रिजेस में जनरली होते हैं. वो तो उनका दूसरा कारण है सर. मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है. सिंपली सपोर्टेड का उनका शायद डिस्प्लेसमेंट का कोई कारण. नहीं, जो केबल वाले वायर वाले ब्रिज होते हैं वो सिंपली सपोर्टेड होते हैं. कंक्रीट ब्रिज सिंपली सपोर्टेड नहीं होते. Sorry, sir. I don't have much idea. Okay. Have you heard about the term bearing? End bearing, sir. Bearings. Bridges के अंदर we are just providing the bearings ना. Yes, sir. I have heard. Okay. Can you define what is truss? Sir, truss is a structure in which only. सर ट्रस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ एक्सियल फोर्सेस होते हैं, बेंडिंग और शेयर फोर्सेस नहीं होता. Okay, bending और shear forces नहीं होते. यस सर. Is it true? सर एक्चुअली पूरी तरह ट्रू नहीं है, थोड़ा सा बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं उसमें, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं. Ignoring in design or in only in theoretical point of view? सर डिजाइन में थियोरेटिकली सर इग्नोर करते हैं, लेकिन जो उसके हम जो जॉइंट्स जो होते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि उसमें थोड़ा सा बेंडिंग आ जाता है, लेकिन उसको हम इग्नोर कर देते हैं. Can example? सॉरी सर. For example, हम joints किस तरह से बना रहे हैं कि उसमें bending आएगा? Example.
सर वो फिक्स की तरह से होता है सर, आई कैन शो यू। Achinte, if we have to make this pin joint in a truss, how will you make it pin joint? सॉरी सर, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? If we are making a pin joint, यस सर। at pin connection, the moment will be 0. यस सर। So if we have to make a pin connection, then how will you make it? पिन कनेक्शन, Any idea? जो भी ब्रेन में आ रहा है। सर ड्रिल करके सिंपली उसको, जैसे स्टील स्ट्रक्चर में जो पढ़ा था हमने वैसे वही करके। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। That's why I'm saying कि जो भी ब्रेन में आ रहा है, try to speak. नट बोल्ट से भी कर सकते हैं, और सर ड्रिल करके जो कन्वे पहले का तरीका था वैसे भी कर सकते हैं। Okay, if we have a truss and moving load is there. Sir, sorry to disturb you, sir. Can you give me 1 minute, sir? Okay, let me give you feedback then. Okay. Sir, I am coming. सर वो आ गया दरवाजे पे, सर वो खड़ा हुआ है क्या? Okay, let's go. हाँ, खाली कहाँ रखी है? भरी है ना? खाली नहीं है, भरी है। गाय ठाकुर के नाम से आई। तो भाई हमारे पास नहीं है। लगा है इसलिए मुझे क्या है? नहीं सर, वो ठाकुर के नहीं दिया वो। क्या है? 5 मिनट वेट कर। Yes, sir. Sorry, sir. Okay, on a bridge there is a rolling load. Yes, sir. Okay, and in truss we always ensuring that the load always passes through the joints. Yes, sir. How will you make ensure the load is passing through the joint? Although the load is moving now, might be this highway bridge, might be the railway bridge, truss Yes. bridge that we have. How will Yes. you ensure? सर लोड तो जॉइंट से ही पास होगा ना सर, मतलब और तो कोई तरीका ही नहीं है। How will you ensure? Just think practically. How will you ensure? Joint पे लगेगा. सर जैसे ये एक Bottom slab, yeah. Try to give ये explanation. ये जैसे एक ब्रिज है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। जब कोई रोल करके लोड जाएगा तो मतलब पहले तो ब्रिज पे आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सर जाना तो जॉइंट्स में ही है। कैसे जाएगा? इसके साथ कहाँ मेंबर कनेक्टेड है? तो यहाँ पे कनेक्टेड ना सर, यहाँ पे। Can you repeat? There was some issue. यस सर, जैसे कि ये एक ब्रिज है, मतलब ब्रिज है, यहाँ से जब भी रोल करके जाएगा लोड पहले इस पे जाएगा, मतलब ब्रिज पे जाएगा, और ब्रिज से फिर सपोर्ट्स में जाएगा। तो जाना तो सर सपोर्ट, मतलब इनडायरेक्टली तो सपोर्ट से ही जाना है लोड को। ट्रस की बात कर रहा हूँ मैं जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनके जॉइंट से। सर वो अरेंजमेंट, यस सर। सर वो अरेंजमेंट इस तरह से किया जाता है कि जो लोड जो लगे वो हमेशा जॉइंट पे ही लगे, इस तरीके से मेंबर्स को अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, let me give you feedback. See, you said irrigation is there, but you were not comfortable in the irrigation. Basic thing I was asking you. I just give you this RL condition question. The reduced level is this and this. Yes sir. Okay, and you said the siphon aqueduct. What you said? Yes sir, siphon I said. Okay, fine. ठीक है. So, what we are doing in this siphon aqueduct? सर साइफन एक्वेडक्ट में जैसे जब भी क्रॉस करता है कैनाल और ड्रेन, जब क्रॉस करता है तो जब कैनाल अपना ऊपर है तो दो हो सकते हैं, तो एक्वेडक्ट या फिर साइफन एक्वेडक्ट। अगर जो ड्रेन का जो HFL है और कैनाल का जो बॉटम है, अगर उसके बीच में गैप है तो एक्वेडक्ट होगा, और अगर ड्रेन का जो HFL है वो कैनाल के बॉटम से अगर ऊपर आ रहा है तो साइफन एक्वेडक्ट देंगे। वर्स्ट कंडीशन क्या होगी इस केस में?
बस कंडीशन सही यही होगी कि जो ड्रेन का जो HFL है वो उसको टच कर जाए, हम्म, यही बस कंडीशन होगी, या फिर उसके ऊपर चला जाए तो। कैसे वर्स हो गए? सर मतलब ज्यादा पानी गिर जाए अगर तो यही तो बस होगा, अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कैनाल पे। अपलिफ्ट प्रेशर कैसे ज्यादा होगा? जब हाई फ्लड लेवल ऊपर जा रहा है, कैनाल का एफएसएल फिक्स है, तो कम होगा, बढ़ेगा थोड़ी। सर बढ़ेगा ना, अपलिफ्ट प्रेशर तो बढ़ेगा ना सर कैनाल पे। अपलिफ्ट प्रेशर किसके थ्रू आता है, किसके कारण लगता है अपलिफ्ट प्रेशर? पानी के थ्रू, पानी के। किस हेड के थ्रू लगेगा, कौन सा हेड होगा? नीचे नीचे का जो पानी है सर, ड्रेन में जो पानी जमा है उसका। पढ़ो जरा, थोड़ा फिर से पढ़ो। वर्स्ट कंडीशन में ड्रेन में कोई पानी नहीं है, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ड्रेन के बेड लेवल पे है, और कैनाल फुल सप्लाई लेवल में। इन दैट केस दैट हेड इज द मैक्सिमम हेड, और उस वक्त जो अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होगा दैट विल द हाईएस्ट। ओके सर। हेड की बात कर रहे हैं ना, एक बार इसको गो थ्रू करो आप। ठीक है ठीक है। सर, बाकी जो मैंने आपसे पूछा स्ट्रक्चर कि का था तो मैंने इरिगेशन ज्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में। कोई इशू नहीं है, कोई कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, मैंने आपसे पूछा कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर व्हेन लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू द वॉल्स to the footing, and from footing it is going to the soil. Meaning to say that we don't have this arrangement of the beam and column at all. The slab is directly resting on this masonry wall. ओके Okay, that is load bearing structure. ओके The frame structure, when we have this combination of beam and column at all. ओके सर। Fine. And this, what I ask you regarding this, how load is being transferred to the trusses. Although we are just taking care, the load always act on the joints. So we have the bottom chord members, we have the top chord members in the trusses. यस The सर। bending is also there in the truss members. यस Okay, it is clearly written in the IS code. यस। Whenever we have the welding at the both joints, can you tell me what will the effective length? देयर इज वेल्डिंग सर, आई थिंक इट इज 0.5 L। Oh, don't think like that one. I'm asking about the code. I'm talking about the design point of view. It is kind of this 0.8 times of L. यस सर। Okay. Now suppose think if the both ends are pinned. Achintya, if both ends are pinned, then what it mean? The moment will be zero at the ends. यस सर। Okay, then the force in the member is purely axial. But if moment is not zero, definitely there is some kind of the bending. The यस code is taking care of that one. It is clearly written in the IS 800 2007. ओके Okay, we are saying in the this truss member the unknown force is only axial, but practically this is not true. Or even I clearly written in the IS 800 also. यस सर। And we are designing itself. We are just doing this design for the railways, and there we are taking care of that one. How to make this connection as a pin? The simple answer: just connect one rivet or bolt at the ends. यस सर। Okay, that is not the old method. Still we are doing. In factories we have the members and we are assembling it on the side. And suppose you will find, and you have seen in your life, there's some more number of rivets or bolt at one location, one joint. There's second joint. A member is connected to the, let it be 50 rivets here, 50 rivets here, more than one rivets. What it mean? Is it not a pin connection? यस सर। Now see, just see the scissor. Now only one rivet is there. So this rotation is like this one. Just यस put the two rivets. You can't rotate it like this one. यस सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि रिवेट में जो है मतलब वो आग वगैरह जलाते हैं तो उसमें थोड़ा मतलब खतरा ज्यादा होता था, तो अभी उसको थोड़ा कम कर दिया रिवेट को, और वेल्डिंग को और बोल्टेड कनेक्शन ज्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके रिविट हमने ओमिट किया है, पर ये नहीं है जो आप बोल रहे हो। ओके, राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस HSFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन यस ग्रिप बोल्ट. यस सर। Okay, that is also considered as a permanent fasteners. यस Welding we are also using on the sides. यस सर। Okay, so okay, ठीक है then. Achintya, anything else you want to ask? नो सर। सर आपका क्या फीडबैक, मतलब जनरली और क्या इम्प्रूव करना See, है? देखो, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ बेसिक चीजें व्हाट आई आस्क यू, एंड इवन आई जस्ट टोल्ड यू आंसर आल्सो. व्हाट इज फ्रेम स्ट्रक्चर, व्हाट इज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. ओके, फर्स्ट थिंग, जस्ट डोंट से डायरेक्ट नो, जस्ट थिंक लिटिल फॉर द 10 सेकंड, और ओके, जस्ट वर्क ऑन द क्वेश्चन. जो प्रोफेसर सामने बैठे होंगे ना, उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड थे उनके क्वेश्चन के अंदर. एकदम से फटाक से नो मत बोलना. ओके सर। ओके, जस्ट टेक अ लिटिल पॉज. ओके, अगर आपको आता है ठीक है, अदरवाइज यू कैन से सर राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दिस थिंग.
And after structure say, they will ask the basic thing from the structure. So essay part, if there is a designer from the steel structure, he and she will ask you the question from there also. Okay. Which one code is there? That is also the structure part. Na? RCC is Yes, also sir. structure part. Yes, sir. Why you are drawing the BMD? Why you are drawing this SFD? And what is the difference between the BMD SFD that you are finding the strength of material, and same BMD SFD you are just drawing the ILD also? What is the relation between that? Why Yes. you are going to calculate the deflection at all? Is it possible to use the SOM formula for the deflection calculation in the realistic structures? How will you take care of that? Yes. Okay, they will relate the things. Achintya, listen one thing. They will not ask the very simple question, straight question. They will relate the things. Okay, they will relate the one subject with the other subject and it with the practical aspect also. Okay. Okay, so be ready for that one. Keep your brain open, and that's why I just said to you, what is coming in your brain, just explain it. और आप सही, मुझे पता था आप सही सोच रहे होंगे और आपने बोला भी वो चीज, तो कोशिश करना. यू कैन से सर आई कैन गेस, Okay. दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. अगर सही होगा तो आपको फायदा मिलेगा, गलत बोल दोगे तो उससे कोई लॉस नहीं होगा. राइट? ठीक है ओके, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग. सर. इरिगेशन वगैरह भी पढ़ के जाना चाहिए क्या? अब स्ट्रक्चर में है, कब है आपके इंटरव्यू? परसों है सर, 6 तारीख को. वो कल तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर. क्या बोलोगे अगर पूछ लिया? मना नहीं कर सकते ना. अगर मान लो उन्होंने पूछ लिया कि इंडिया में कौन से मॉड्यूल है, क्या बोलोगे? रिजिड मॉड्यूल होते हैं इंडिया के अंदर. ओके, इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ. ओके, अपॉर्चुनिटी इज देयर, जस्ट ग्रैब इट. यस सर. तो सर मतलब पढ़ना चाहिए क्या, मतलब? Little, just have a look on the irrigation. What are the basic things in irrigation? Just like faults are there. Why faults we are providing? What is the spillway? What is the purpose of energy dissipator? What type of flow we have in this irrigation also? Isn't it? How this fraud number is important. ठीक है. Okay, if you are getting opportunity, I think just grab it. Yes sir. Fine. Yes. Anything else? No sir, thank you sir. Okay then, all the best. Thank you.